Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing. Today I am with the next part of the video, that is crisis intervention. The contents to be covered will be the stress management techniques or strategies. बेसिकली जब हमने देखा कल इन द प्रीवियस वीडियो कि किस तरीके से स्ट्रेस होता है हमें और किन किन चीज़ों की वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेसर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि हाउ डज़ इट अफेक्ट इन इंडिविजुअल, मगर फिर हमारा अडेप्टेशन आता है होमोस्टैटिक मैकेनिज़्म कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल बैलेंस करता है द स्ट्रेस एंड द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो अब कुछ ऐसे व्हेन द स्ट्रेस इज़ वेरी मच ओवरवेलमिंग, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटर्जीज़ या टेक्निक्स हम बोल सकते हैं जो कि करनी चाहिए इनफैक्ट, ताकि आपका थोड़ा सा स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाए। क्यों? बिकॉज there is a connection between the physical well-being and the psychological well-being of an individual, and there is a cycle जो कि अगर physically आराम होगा एक individual को तो definitely उसको psychologically भी आराम मिल सकता है। तो अगर आप physically कुछ workout करेंगे, different techniques apply करेंगे, वो automatically आपके psychological stress level को decrease करेगी। The first technique जो है that is the take a deep breath. That means you have to practice the deep breathing exercises, or you can breathe keep breathing for several minutes. Take a deep breaths through your nose, and that means inhale through your nose and exhale through your mouth, ताकि full inhale करना है ताकि आपका abdomen जो है वो पूरा बाहर हो जाए, rise हो जाए, and then during the exhale it falls down, and you have to count while you are inhaling and exhaling very slowly. So you can try this deep breathing for few minutes when you feel stressed out. The second is specific practice specific relaxation techniques, which are extremely valuable tools for this stress management. There are very much techniques. For example, जो अभी बात की थी डीप ब्रीदिंग, वो भी इस रिलैक्सेशन टेक्निक में आएगी, या व्हाट इज़ कॉल्ड एज मेडिटेशन। ठीक है, कुछ ध्यान करना हमारे में तो हम नमाज पढ़ते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट, या डीप मसल रिलैक्सेशन जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी भी बोलते हैं, या प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक। उसमें हम पूरी बॉडी मसल्स को अल्टरनेटली टेंस और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से एक स्टेट आ जाता है बॉडी में जिसमें आप रेस्ट फील करते हो, एक रिलैक्सेशन फील करते हो, एंड यू आर फीलिंग वेरी मच calmed out by these specific relaxation techniques. Next comes the managing time, because all of a sudden we start working for many of hours, and we cannot manage our time properly. We don't give time proper time to our physical as well as the mental health, so we feel stressed out. If we have the the priority of the things जो हमें करनी होती है, hectic life tasks होता है हमारे day to day life में, daily basic task हम करते हैं, we feel very much engaged throughout the day. This may create the anxiety. So we have to manage the time कि किस तरीके से टाइम स्केड्यूल करना है हमें वर्क के लिए भी और रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए. वी हैव टू टेक टाइम, मैनेज द टाइम, एंड वी हैव टू स्पेंड द टाइम रिक्रिएशन टाइप, लाइक पिकनिक टाइप. हम देखते हैं पिकनिक जाते हैं और गोइंग फॉर द आउटिंग, सो दैट आवर stress gets relieved out. Connect with others, it is the next one, because it is the very much good for the health क्योंकि हम continuously अपने work related jobs में engage होते हैं, but we should when we get time, we have to get time and meet our friends
meet our peers, meet our relatives. इससे क्या होता है, sadness ख़त्म हो जाती है, loneliness ख़त्म हो जाती है. Otherwise we are एक monotonous life हो जाती है, एक boredom जैसी life हो जाती है जब continuity में वो एक ही चीज़ करता रहता है, going for the job, coming home and eating food and sleeping. This should not be there. We have to connect with our friends, with our relatives, go for outing for some time. This may help in the relaxation and relieve your stress. Next is talk it out. If you feel sometimes you are feeling something, very depressed out, and you should not, bottle up all the emotions. अपने ही में रखने नहीं चाहिए, because it can create a lot of the frustration and a lot of the stress. इसी तरीके से and you don't know how to tackle the situation. Your mind at that time feels very much confused and cannot solve the problem. So you should talk it out. If you are not getting what to do in this particular situation that is very stressful, so better is to talk to your mother, better is to talk to your parents, better is to talk to your sisters, or your siblings, and then or what you can do, write it down on the paper and analyze the problem, और अपने ही से at least solution ढूंढने की कोशिश करो. But you have to talk it out. We should not just keep it in a mind, inside, otherwise ना ही कोई solution आएगा and you will feel more and more stressed out. Next is take a minute of vacations. जैसे हमने अभी बात की थी, because there are in the life there are very much stressful situations, and today also if we see the COVIDs, the 2020 year, this year it was full of the stress because of the different catastrophic events which go on in our life. But we have to take a minute of the vacation, or whenever you are in the job, for example our nursing job, it's very hectic, and we have to work round the clock till the client. So if we feel some sort of because I told you it's a vicious cycle between the physical and the mental well-being. If you feel physically discharged, and if you feel physically very much overwhelming, then you should take a minute, go for deep breathing or progressive muscle relaxation technique, so that you feel a very much energetic in the next situation. Choose the place, and sometimes you need to listen for something. Some people listen to the music or whatever they feel good. तो वो करना चाहिए ताकि आपको पीस, एक सेंस ऑफ पीस मिले अपने लिए भी. मतलब जो हैक्टिक लाइफ प्रोसेस होता है या हैक्टिक लाइफ स्केड्यूल होता है, वी शुड हैव अ मिनट ऑफ रेस्ट एंड जस्ट फोकस ऑन आवर साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग. Next is monitor your physical comfort, because as I told you, Jacobson's also told that there is a relation between the physical and the साइकोलॉजिकल वेलबींग. आपको ये भी होगा कि जब आप फिज़िकली थकते हो, आपका ऑटोमेटिकल मेंटल एग्जॉशन भी होता है, एंड व्हेन यू आर फिज़िकली फिट, लॉट ऑफ स्ट्रेस गेट्स रिलीव्ड आउट. उसी तरीके से यू हैव टू while you are what is called as considering your stress level psychologically, you have to comfort your physical health as well. ठीक है, for example if you are working on the computers for the long time, you may have eye strains, you may have back aches, or as a nurse we have to keep be standing in the wards. That can create the back problems, and you just you have to maintain the different postures while giving different procedures to the client. So उसके लिए भी आपको कुछ minutes लेनी चाहिए to arrange your physical comfort level, ताकि उस तरीके से आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखो, ताकि आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी अच्छी रहे. Love is the another technique, because sometimes we have to be happy always, and the humor in our life may bring a sense of
relaxation, and try to laugh with yourself, and always take every situation very much pleasantly, and not every situation very much critically, and think over it more and more. ऐसा नहीं करना चाहिए. No, if there is any situation which you think that it will be stressful, but take it calmly, and you should definitely laugh at many of times, because we have a therapy called the laughter therapy, जिससे हम ventilate करते हैं. Once you start laughing in any petty things, then you automatically will definitely आपको हर एक situation बहुत कम stressful लगेगी, और आपको हर एक सिचुएशन में एक चार्मिंग सा मिलेगा, एक ह्यूमर सा मिलेगा अपनी लाइफ में. Next is the know your limits. We must know our limits, because one thing is that the mentally stable person, अगर आपको पता भी होगा इस बारे में, is knowing what he can do, right? उसको पता है उसके लिमिट्स क्या. He should accept himself with the positives and the negatives in him. So we should know what we can do, and we should know the things which are not in our control or which cannot be changed at the particular moment. और उसके लिए हमें fight नहीं करना है at that time. We can work hard, but if something is within our limits, we achieve it. But if it is beyond, then we should know our limits. And we should adapt according to the accordingly, right? जो आप चेंज नहीं कर सकते हो चीज़ें, उनके लिए आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है. और यू शुड हैव अ गुड कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू शुड accept your positives as well as negatives. Get physical. Sometimes when you feel very much nervous, anxious or upset, you should release your that sort of energy, the negative energy, and towards the positive energy वो आपको release करनी चाहिए. कैसे? By engaging in sort of physical activities. लाइक कोई वॉक के लिए जाता है, किसको बहुत स्ट्रेस होता है, वो बोलता है ओके लेट मी एक्सरसाइज फॉर सम टाइम, 15 मिनट्स एक्सरसाइज कर लेता है. या मैं घूम के आता हूँ, लेट मी टेक द फ्रेश एयर. वो ड्राइव पे जाता है, वो रनिंग के लिए जाता है, स्विमिंग के लिए जाता है, या फिजिकल कोई एक्टिविटी गेम्स वगैरह खेलता है. उससे क्या होता है, क्या उसको बोलते हैं, और डांसिंग, उससे उसका जो फिज़िकल ये जो स्ट्रेस आउट है वो उसके ज़रिए से किसी और तरीके से वो ड्रॉ करने की कोशिश करता है और रिलीज़ करता है अपना नेगेटिव energy, and you will feel more what is called as uptight feeling, and you will feel relaxed, and you will feel very much energetic. And many of the experts also recommend 20 minutes of aerobic activity daily, which are used for relieving the stress. नेक्स्ट इज़ वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर बॉडी. डेफिनेटली अगर हम हेल्दी अच्छे से खाएंगे, हेल्दी ईट करेंगे, एडुकेट स्लीप जितना हमें लेना है उतना लेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो फिज़िकल हेल्थ है वो तो अच्छा रहेगा ही. ऑटोमेटिकली इट विल अफेक्ट डेफिनेटली आवर व्हाट इज़ कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ. वी शुड नॉट कंज्यूम टू मच ऑफ कैफीन, वी शुड नॉट कंज्यूम टू मच ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड एज शुगर. एंड ब्रेकफास्ट टाइम पे करना चाहिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग. जो ब्रेकफास्ट अच्छे से करेगा एंड इन अ गुड अमाउंट उसका डे बन जाता है. एंड ही शुड ईट वेरी मच हेल्दी. वी शुड गो फॉर द राइट अमाउंट ऑफ द स्लीप. वी शुड नॉट ओवर ईटिंग भी नहीं करना चाहिए, या एक्सेसिव ईटिंग ऑफ द जंक फूड्स एंड ऑल दैट सिचुएशन. इन ओवरऑल हमें अपना फिजिकल एंड अपना फिजियोलॉजिकल वेलबींग मेंटेन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल टेकिंग अ लॉट ऑफ द वेजिटेबल्स and fruits and good amount of the water can help in nourishing your body. And next is think positively. We should focus on the positive things. If we have some negativity in our mind, तो we should draw कि हमें उसको भी एक positive तरीके से लेना चाहिए. We should make efforts to combat these sort of what is called as negative thoughts into the positive thoughts. हाँ, कभी कभी होता है लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है या कोई चीज़ गलत हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये सोचना है कि everything will go wrong. No, we have to think positive.
पॉजिटिव इन मेनी ऑफ द सिचुएशंस, एंड उसके लिए लड़ना है, एंड डेफिनेटली जिसकी वजह से हमारा क्या इसको बोलते हैं अच्छा रहेगा दिस साइकोलॉजिकल वेलबींग। उसके बाद आता है क्लियरिफाई योर वैल्यूज़ एंड डेवलप द सेंस ऑफ लाइफ इन अ मीनिंग, बिकॉज हम यहाँ आए हैं, वी हैव कम टू द वर्ल्ड फॉर अ सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फॉर अ पर्पज़, ठीक है ना। वंस आपको लाइफ में पर्पज़, आपके वैल्यूज़ मिल जाएंगे, एंड रियली यू वांट टू नो व्हाट यू आर गोइंग टू और व्हाट यू हैव टू डू विथ योर लाइफ, उसके बाद आपकी बेटर फील हो जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक का गोल होता है टू अचीव समथिंग, he focuses on that goals, he leaves the rest of the negativity in his life and focuses on that। लेकिन जब किसको पता ही नहीं होता है, वो इसके पीछे भी उसके पीछे भी इतनी चीज़ों के पीछे पड़ता है कि उसकी लाइफ फिज़िकली भी अल्टर हो जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाती है, एंड साइकोलॉजिकली भी वो स्ट्रेसफुल हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ही एक स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस सेंटर्ड हो जाती है। इसकी वजह से हमें वी हैव टू क्लियरिफाई आवर वैल्यूज़ एंड डेवलप अ सेंस ऑफ मीनिंग इन आवर लाइफ, जो हमें सेटिस्फैक्शन दे, एंड जैसे कि भरोसा करना, तवक्का करना, हम इस्लाम में बोलते हैं, दैट विल ब्रिंग अ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एट मैनी ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट इज़ द compromise, because compromise is very important. You cannot survive without compromising. Sometimes you have to compromise, sometimes the other have to compromise. If you are in a family, you have to compromise with your parents, with your siblings, and so do they. It's a reciprocate relationship, compromise. ऐसा नहीं चलता है कि एक ही हाथ से ताली बजेगा. It is both the hands have to work together, both hands have to compromise to be together, then and only then they can sound a clap. But क्या इसको बोलते हैं, उस चीज़ में we have to, sometimes you are being very much restricted, or the strictness in your molding behavior, जिसकी वजह से strains आते हैं, जिसकी वजह से stress आ जाता है, you feel more much stress because the things will not work out unless you will in one way or the other way compromise करना है, ठीक है। अब अगर आपको जॉब लगनी है तो कभी सैलरी में कंप्रोमाइज़ करना है, या अगर सैलरी ठीक है तो जॉब में भी पहले ही आपको वो लेवल नहीं मिल जाए अपनी लाइफ में जो आप बोलते हो। सो अ सॉर्ट ऑफ कंप्रोमाइज़ यू हैव टू डू टू मेक योर लाइफ ईजियर। Next is the have a good cry. Sometimes crying is very important and it relieves the periods of the stress. So if you have the anxiety, and to relieve this anxiety because they get converted into sometimes into the physical symptoms, आपको टेंशन से headache हो जाता है, vomiting हो जाती है, stomach upset हो जाता है, so sometimes you have to cry it out, ठीक है। तो it is a good thing if you cry, because it ये आपके फीलिंग्स को बाहर लाते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं आपके फीलिंग्स, एक टाइप ऑफ कैथारसिस हो जाता है, जिसकी वजह से लेवल ऑफ द स्ट्रेस फिर डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन। चाहे कितना भी स्ट्रेस लेवल हो, हमें खुद ही ये तो आपको समझ ही आएगा कि ड्रग्स नहीं करने चाहिए, बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी आर मोर मच स्ट्रेस्ड आउट वी गेट द पीपल गेट थ्रू इट, वो किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, अल्कोहल सहारा लेते हैं, स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, विच शुड नॉट बी द केस, और समटाइम्स सेडेटिव्स का सहारा लेते हैं टू डिक्रीज देयर स्ट्रेस लेवल्स। बट द वे यू थिंक, by changing the way you think and solve the problems, that may impact what is called as level of stress. और अगर आपने खुद मेडिकेशन लिया तो ये सारा जो आपका जजमेंट होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर्स होते हैं, जिनसे आपकी कैपेबिलिटी होती है सोचने की कि what should be done and what should not be done, तो ये ख़त्म हो जाती है। So we should avoid the self medication. Next is look for the pieces of the gold around you. That means you have to see the better one. There will be negative things, there will be positive things, there will be enjoyable moments, and there will be distractible moments. So to look for the good things in anyone, and कभी कभी आपके अराउंड ऐसे पीपल होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव होता है, बट समटाइम्स यू हैव टू लुक कि उनमें भी आपको कुछ अच्छा देखना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी लेवल जो है वो लिफ्ट हो जाए,
आपके स्पिरिट्स जो है वो लिफ्ट हो जाए, रादर कि आप क्या इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड लेवल में चले जाओ और साइकोलॉजिकली आप स्ट्रेसफुल हो जाओ। तो इसी वजह से आपको अच्छा देखना पड़ता है। जो भी अगर बुराई भी होगी आपके इर्द गिर्द, यू हैव टू सर्च फॉर द गुड around you. That was all about this topic. Hope you got it. I'll be soon with the next video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.